Hello guys, in this video we will discuss about Chinese remainder theorem. The Chinese remainder theorem, in short form CRT, is a theorem in number theory that provides a way to determine an unknown number x from its remainders when divided by several pairwise co-prime numbers. The theorem is particularly useful in modular arithmetic and has application in various areas of computer science and cryptography. So this is the short definition of Chinese remainder theorem. This theorem is used to find the unknown number that is called x, and it is a part of number theory. It calculates the unknown number from its remainders, and we divide the given number by several pairwise co-prime relatively prime numbers. What is co-prime numbers? Suppose there are 3 and 4. There are two numbers 3 and 4. Then the co-prime number of if these numbers are co-primes, then their remainder will be 1. If we find the GCD of 3 and 4 will be 1. So if we divide 4 by 3, we get remainder 1. Similarly, the other number may be 4 and 5, and like that. 4, 5 is also a co-prime number. If we divide or take the GCD of 4 and 5, we will get 1. To check it, if we divide 5 by 4, we will get remainder 1. So 3, 4 are co-prime. Similarly, 4, 5 are co-primes. So pairwise co-prime numbers will be used to take the remainders. Now, suppose there are given example. Suppose x is unknown number that we have to find the value of x, and if we divide this x by this m1 number, then we get the remainder r1. यहाँ हम लोग x एक अननोन नंबर ले रहे हैं, जिस अननोन नंबर को हम डिवाइड करेंगे m1 से, तो इसका रिमाइंडर r1 होगा. If we divide this x by m1, then we get remainder r1. Similarly, the same x will be divided by another number m2, then we get remainder r2, and so on. There may be 3 or 4 or 5 different divider, and these divider must be co-prime. I mean m1 and m2 must be co-prime. What is co-prime? The GCD of m1 and m2 will be 1. So if we divide m2 by m1, if m2 is greater than m1, m2 m1 से बड़ा हो, तो m2 को यदि हम m1 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर r1 मिलना चाहिए. इसी तरह से x को यदि m2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर r2 होगा, और इस तरह के सेट दिए हुए हैं. इसी सेट के हेल्प से हमें इस x को फाइंड आउट करना है, जिसको हम कह रहे हैं अननोन नंबर, दैट इज x. फ्रॉम इट्स रिमाइंडर, दीज आर द रिमाइंडर्स व्हेन वी डिवाइडेड बाय सेवरल pairwise co-prime numbers. Several pairwise co-prime, I mean m1 m2 is the first co-prime, then m2 m3 will be the second co-prime, then m3 m4 and so on will be co-prime. Similarly, m2 to m3 must be co-prime. So if these m1 m2 mk are co-prime relatively, then we will use this theorem to find the unknown number x. यदि m1 m2 co-prime है, m2 m3 co-prime है, m3 m4 co-prime है, ये सारे m1 m2 m up to mk co-prime हो और उनके ये रिमाइंडर्स दिए हुए हो, तो हम इस x को अननोन वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से. वेयर r1 r2 rk are the remainders and m1 m2 mk are
pairwise co-prime moduli. The Chinese remainder theorem states that there exists a unique solution modulo m, and the value of m will be calculated by the multiplying the m1, m2 up to mk. So if we multiply all these numbers, then we get m. Now, what are the steps to find the unknown number x? The solution can be found using the following steps. First of all, we calculate mi, and this mi is nothing but the m divided by mi. In this above example, there are a number of congruence in which divider is m1, m2, m3. m1, m2 ये मेरे डिवाइडर्स थे, m3 डॉट 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 m के तक. यदि ये सारे मेरे डिवाइडर्स हैं तो सबसे पहला काम होता है हमें m को फाइंड आउट करना. व्हाट इज m? टू फाइंड द m we will multiply all the divider that is given in the problem. m1 into m2 into m3 up to mk. Thus we get the value of m. And if we want to find the mi for this number, then we divide this m by this mi. So to get mi, we multiply the all these numbers except this m1. So to compute mi, m divided by small mi mean this one, and for each i, हर एक i के लिए, हर एक डिवाइडर के लिए हम ये mi को कैलकुलेट करेंगे with the help of this capital M. Then we find the ni such that mi dot ni congruence to 1 mod mi for each I, where ni is multiplicative inverse of mi. What is multiplicative inverse? Suppose we have x, a number is given x, then its multiplicative inverse will be 1 by x and their product must be equal to 1. x का multiplicative inverse क्या होगा? x को यदि उसी x के से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उसका रिजल्ट 1 मिलेगा. यानी x को 1 by x से हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट मेरा 1 होगा और इस x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 by x. इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, x इंटू 1 by x. 1 by x को हम लिख सकते हैं x minus 1. So x and its inverse must be equal to 1. Their product must be 1. Then x inverse or x minus 1 is the multiplicative inverse of x. Now to find the unknown number x, we use this formula, x equal to r1 dot m1 dot n1 plus r2 m2 n2 multiplication of r2 m2 n2, similarly plus up to last values rk dot mk dot nk, where dot represent the multiplication, rk multiplied by mk and mk multiplied by nk. If we find the sum, then we take the mod m, where m is the nothing but the product of all m1 m2 m3 up to mk, where mi is the product of all moduli except mi. mi को हम कैसे निकालते हैं ये अभी यहाँ पर बताया कि किस तरह से हम mi को कैलकुलेट कर सकते हैं. So these are the 3 steps to find the unknown values x. Let us take one example to clarify this problem. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं. हमारे पास एक नंबर अननोन नंबर x है जिसको हम 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर मेरा 2 मिलेगा. सेम नंबर को यदि 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा और इसी तरह से उसी सेम नंबर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 मिलेगा. यहाँ पर 3, 4, 5 हमारा को प्राइम
होना चाहिए। तो 3 4 5 को प्राइम है या नहीं, सबसे पहले हम इसके पेयर को देखते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट पेयर, 3 4, देन 4 5 एंड लास्ट थर्ड नंबर 3 and 5. These are the three pairs, sorry 3 5, ये को प्राइम होने चाहिए। यदि 4 को 3 से फाइंड डिवाइड करें हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। सो जीसीडी ऑफ 3 4, जीसीडी ऑफ 4 5 and GCD of 3 5 must be equal to 1. You can check here. 5 को 4 को यदि हम 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर मेरा 1 मिलेगा, रिमाइंडर 1। इसी तरह से 5 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होगा। 5 और 3 को यदि हम डिवाइड करें तो जैसा जीसीडी का तरीका होता है, 3 से हम डिवाइड करते हैं 1 times 3, देयर इज ए 2, एंड इस 2 को यदि हम 3 से फिर डिवाइड कर दें तो 1 टाइम 2, ये मेरा जीसीडी फाइंड आउट करने का तरीका है, रिमाइंडर 1 होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पेयर्स हैं वे आपके को प्राइम्स हैं। तो यदि ये को प्राइम्स हैं देन वी कैन अप्लाई द चाइनीज थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये सारे को प्राइम्स हैं इसलिए हम इस पर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्स्ट काम होता है वी हैव टू कैलकुलेट द एम। हाउ वी विल कैलकुलेट द एम? टू कैलकुलेट द एम वी मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 4 5 dividers. So we write 3 into 4 into 5 and we get 60. Then we have to calculate each mi. For mi, this is our m, and to calculate this m1 we divide the m by m1. Here this 3 is m1, this is our m2, and this one is our m3. This 2 is r1, this 3 is r2, and this 2 is r3. So if we find the m1, to find the m1 we divide this m, and m is nothing but the m equal to all divided m1 into m2 into m3. So we get 60. 3 into 4 into 5, 3 into 4 into 5 equal to 60. m1 को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो 60 को यदि हम m1 मीन्स 3 से डिवाइड करें देन वी विल गेट 20। सिमिलरली m2 को फाइंड आउट करने के लिए अगेन 60 को इस 4 से डिवाइड करेंगे। 60 को 4 से डिवाइड करें देन वी विल गेट 15, और 60 को थर्ड m से डिवाइड करें देन वी विल गेट m3 12. So we have now m value, we have got the m, m1, m2 and m3, and r1 r2 r3 is given in problem. So we move to the next step, find n1 n2 n3. We move to the next step, n1, to find the n1 n2 n3. To find the n1, m1 dot n1, where n1 is the multiplicative inverse of m1, congruence to 1. Then m2 dot n2, multiplicative inverse of m2, and like that. Then if we use this formula, then m1 dot n1 mod 3 congruence to 1. We can shift this mod value in left side. So if we shift this mod 3 in left sides, then it will be m1 dot n1 mod 3 congruence 1. And for second, m2 n2 mod 4 congruence 1, and this mod 4 comes in left hand side. And for third, m1 m3 dot n3 mod 5 congruence 1. If we put the value of m1 n1, m1 is 60, m1 is 20, so we put here 20, and we have to find the value of n1, here congruence 1. So we have to use here heat and trial methods. Which value we will put here n1, so that if we take the mod of the product of 20 and n1, then we will get the remainder 1. 20 और n1 के प्रोडक्ट को यदि हम 3 से डिवाइड करें
तो मेरा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसके लिए n1 की वैल्यू को हम हीट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से m2 की वैल्यू 15 और n2 को हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड। वी डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ m15 and n2 by 4 and we check the remainder whether it is 1 or not. 15 और n2 को मल्टीप्लाई करके हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। तो इस तरह से थर्ड के बारे में, थर्ड m3 हमारा 12 है, 12 इंटू n3 और यहाँ पर n3 को कैलकुलेट करना है, जिसमें हम इस प्रोडक्ट को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर मेरा 1 आना चाहिए। सो इन दिस केस if we put here 2 and take the product 20 into 2, that is 40, and if we divide this 40 by 3, then 3 1 1 0 3 times 9, we get the remainder 1. Similarly, for this n2 we will use 3. You can use 1, but it will not give you remainder 1. For n2 equal to 2, we will not get the remainder 1. If we take n2 equal to 3, then 15 into 3 becomes 45. 45, 15 into 3. If we put n2 equal to 3, then we get the product 15 into 3, that is 45. And if we divide this 45 by 4, 1, 4, then 5, again 1, 4, we get the remainder 1. So the value of n2 will be 3 and the value of n2 will be 2 and its value is 3. Now if we take the value of n3 1, we will not get remainder 1. For 2, we will again not get value 1. So after heat and trial, we check that if we take the value of n3 equal to 8, then the product of 12 and 8 will be 96. And if we divide this number by 5, 1, 5, 4, 6 and 5 9 ja 45, then we will get the value. So the n1 becomes 2, n2 becomes 3 and n3 becomes 8. So this is the way to find the value of n1, n2 and n3. You can also use this formula, but we have changed this formula in a simpler form by bringing the mod 3 in left hand side. You can direct use it. So now we have the value of n1 2, n2 3 and n3 8, because 20 into 2 mod 3 equal to 1, 15 into 3 mod 4 equal to 1 and 12 into 8 mod 5 equal to 1. So now we have all the values r1, m1, n1, r2, m2. So we will calculate the value of x. To find the value of x, we will apply the formula r1. This is the remainder, and remainder is given here in the problem. R1 is 2, R2 is 3 and R3 is 2. So 2, 3, 2 are the remainder. So this R1 is 2, this R2 is 3 and this R3 is 2 as given in the problem. And we have calculated M1 at this place. We have calculated the M1, that is 20, M2 15 and M3 12. So we put the value of M1. M1 is 20, M2 is 15 and M3 is 12. And the value of N1, just I have calculated N1 equal to 2, N2 equal to 3 and N3 equal to 8. So we put all these values and we calculate it and take the mod 60. Mod 60, that is mod M. We have calculated M by the all divider in the given problem. So if we calculate this value, 2 into 20, 40 into 2, 80, then 15 into 3, 45 into 3, 135, and 12 into
896 and 96 into 2, that is 192. So if we add all these value, we get 407. Then we divide this 407 by the m, that is 60. If we divide this 460 by 407 by 60, then we will get 6 times 360. So we get 7, and from 10 subtract 6 from 10, we will get 4. So we get 47. So the unknown value of x becomes 47. We can verify all these value. इस तीनों के प्रोडक्ट को हमने सम किया. फर्स्ट का प्रोडक्ट 80, सेकेंड का 135, थर्ड का 192. इस सारे को ऐड किया. ऐड करने पर हमें 407, और इस 407 का मॉड 60 निकालने पर हमें 47 मिला. दैट इज द अननोन वैल्यू. अब इस 47 को यदि 3 से डिवाइड करें, हम 47 को 3 से डिवाइड करें, तो हमारा रिमाइंडर जो क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है वो आना चाहिए. लेट अस चेक इट. 4 1 7 3 5 15, so we get 2. Similarly, we divide this 47 by 3, sorry 4. 1 time 4, then 7, and again 1, 4, we get 3. This is again correct. And if we divide this 47 by 5, 5 9 45, so we get 2. So all conditions are satisfied. So we can say that the unknown value unknown value of this x is 47. So the solution to the system of congruences is x equal to 407 mod 60, that is 47. So this is the unknown value. Thank you.